कोई कुछ नहीं सर, आज आपसे गुड आफ्टरनून। आज निखिल से कोई बातचीत होगी हमारी काफी टाइम बाद आए। अरे where were you निखिल? कहाँ थे आप निखिल? where were you? अरे निखिल Seems he is less interested in talking to us. कृतिका कल कहाँ थे आप? Good afternoon, sir. Good afternoon. Where were you yesterday, Sir, कृतिका? मैं बहुत बिजी हो गई थी कॉलेज के काम से। Okay. बहुत You are जान doing रहा था masters. कॉलेज वाले। You are doing No sir, masters. बैचलर्स का थर्ड ईयर है सर। बैचलर्स DI का से? फाइनल ईयर है। No sir, क्या मैं तो DU से ही कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। Okay. How lucky. बच गई बेचारी। अरे मुझे भी पता है, मुझे भी मौका मिला था, बट माय फादर सेड नो। Good afternoon to all. So we wanted to talk to Nikhil, but Nikhil seems a bit busy. So I feel let's begin with our topic, climatology. So till now, if there is any doubt, you people can ask. Otherwise, we'll be moving forward. कुछ पूछना है किसी को? No sir, I'm not busy. So why you are not responding, Nikhil? Where were you for so many days? You know, Vipul daily तुम्हारे बारे में बात करता है. So many years. Yes, I cannot hear you, Nikhil. I think your mic is not working. His voice is not working. Oh my God. चलो ठीक है. We'll feel Nikhil later. I got a new laptop, sir. My mic is not working. Okay. देखो ऐसा है, यहाँ पर अपने मन से इन्फ्रेंसेस ना निकालें. ये क्लास रीजनिंग की नहीं है. स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं. न्यू लैपटॉप. Okay. So let's come to the topic now. I feel you people are here. तो कुछ पूछना है कल की क्लास से? From last class, you people want to ask anything? Yes. Yes. Do tell me. आगे बढ़ें. So where we were, frontogenesis we were doing, है ना? Frontogenesis. So we started with the front, and I talked a bit about front. That front formation is all because of the meeting of two different kind of air masses. The hot humid air mass from the tropical region, which goes with the westerlies, and the cold polar air mass that comes with the polar easterlies. They both meet in the subtropical subpolar region, and in this region they lead to formation of a totally different climatic characteristics, you know, and thus leads to formation of temperate cyclones also. So एक heading लिखो, types of front. And basically in this types of front I'll be giving you idea about 4. वार्म फ्रंट्स रह गए थे सर, आपने बस इसने लिखा था आज. हाँ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वही स्टार्ट. So in this types of front we'll be beginning with like 4 तरह के फ्रंट्स की बात करनी है. वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट्स, ऑक्लूडेड फ्रंट, एंड लास्ट में स्टेशनरी फ्रंट. In which along with this I'll be telling you about how the cyclone formation occurs. Temperate areas में cyclone formation कैसे होता है? This would go parallel, right? You have to understand the concept in this form only. तो शुरू करते हैं. So we were writing, I think, the warm for a front, and in this you should write further that warm fronts are a gently sloping frontal surface formed due to encroachment of warm air
formed due to encroachment of warm air into the territory of cold air. So like it's simple. This is initially parallel system, or you can call it stationary front, where the warm air is flowing like this and the cold air is flowing like this. This is warm, this is cold air. This is coming from north and this is coming from south. So slowly they will try to encroach into each other's property or territory, not property. So they will try to encroach into each other's territory, and soon there will be a development of frontal surfaces. क्या है ये frontal surfaces? कि वो एरिया जहां से वार्म फ्रंट एंटर करने की कोशिश करेगा, there we develop a warm front. A warm front है ना, वो काफी जेंटल फ्रंट होता है वार्म फ्रंट, स्लोप काफी जेंटल होता है. And the area where the cold wind is trying to come and capture this area, there it will develop a cold front. यहाँ पर तो फॉर्मेशन होगा एक कोल्ड फ्रंट का, और यहाँ फॉर्मेशन होगा एक वार्म फ्रंट. विद टाइम आई विल टेल यू मोर. अभी बस धीरे-धीरे समझना, आ जाएगा समझ में, है ना, कि इन चीजों का काफी इंटरलिंकेड है विद दैट टेम्परेचर साइकिल आल्सो. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हाँ, सब पर आएंगे बिल्कुल, बस थोड़ा सब्र रखो. देखो, वेदर एसोसिएटेड विद वार्म फ्रंट, weather associated with warm front. In this, write down. Warm air rises over this gentle slope. Warm air rises over this gentle slope. Warm air rises over this gentle slope and cools adiabatically. वही सेम कंसेप्ट जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. Warm air rises over it in a gentle over this gentle slope and cools adiabatically, and finally causes moderate to gentle precipitation for several hours. And finally causes moderate to gentle precipitation for several hours, right? For several hours. तो देखो, ये है कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है. लाइक यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है वार्म फ्रंट का, सॉरी, और ये है कोल्ड फ्रंट. द वार्म विंड्स आर कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड द कोल्ड winds are coming from the polar direction, and then they are trying to encroach in this warm territory, and the warm air are trying to encroach in the cold territory. तो ऐसे दो एरियाज होंगे. देखो, थोड़ा सा मुझे समय चाहिए इसको समझाने के लिए. This was the line earlier, this was the cold current, and this was the warm current. Then after some point of time there will be encroachment, so it will be a kind of tilt like this. So we would have warm current, or warm wind, cold wind coming from this side and encroaching into the warm territory, and warm wind would be encroaching into the cold territory like this. Yes, it is under influence of westerlies and it is under influence of easterlies. Now you can see that there is a generation of anticyclonic conditions. Anti-clockwise generation. So as slowly there will be a development of front here. एक front यहाँ बनेगा और एक front बनेगा यहाँ पर, because the cold air would slowly push the warm air. तो यहाँ पर जो फ्रंट बनता है, it is quite gentle, है ना, because it is warm front. अभी सिर्फ याद करते चलो, थोड़ी बहुत देर में समझ में आ रही है. ये है gentle warm front, और यहाँ पर जो होगा it would be quite steep, और ये है cold front. ये वो एरिया है जहां पर cold wind would be encroaching faster, very fast, और ये वो एरिया है where the warm wind is encroaching but at a slower pace, because warm wind यहाँ पर ऊपर जा रही है और cold wind यहाँ पर नीचे आ रही है. तो स्टिल यहाँ पर जो warm wind का encroachment स्पीड होता है वो कम होता है, because they rise, तो वो नीचे फोर्स नहीं लगा पाते. Yes,
तो there will be a development of a condition which is called as temperate cyclone. Temperate cyclone. So how this condition is occurring? देखो यहाँ पर cold, warm. Then there will be an encroachment of cold into warm and warm into cold. Then the cold front or the cold, this is cold sector, ये जो ऊपर है, this will increase in area. This cold sector will increase in area. Why? Because the cold sector will push the warm air in this region and let it rise over these frontal areas. Frontal areas. इसको 3D में समझने की कोशिश करते हैं. ये देखो, तो यहाँ से आ रही थी वार्म एयर और यहाँ से आ रही थी कोल्ड एयर. जहां पर भी ये दोनों मीट करेंगी, there will be a development of this kind of front. This kind of front. Yes. And in this front, ये जो वार्म एयर होगी ये राइज कर जाएगी इस तरह से और कोल्ड एयर नीचे वाला एरिया कैप्चर कर लेगी. एंड दिस विल हैपन ऑन 2 लोकेशंस. एक तो ये लोकेशन हो गई जहां पर कोल्ड फ्रंट का डेवलपमेंट हुआ और एक हो गई ये जहां पर वार्म फ्रंट का डेवलपमेंट. ये बन जाता है वार्म सेक्टर जहां पर वार्म एयर रिलाई करती है या रहती है, रिसाइड करती है, और यह है कोल्ड सेक्टर वेयर द कोल्ड एयर रिसाइड्स. कोल्ड एयर. Slowly the area of cold sector increases because it pushes the warm air in this warm sector to rise. और rise दोनों तरफ से, over this warm front also, over this cold front also. And as the wind rises in these two fronts, so there will be a development of this kind of funnel type of arrangement. जो एक warm wind का इस तरह का arrangement बन जाएगा, यहाँ पर भी rise कर रही है, यहाँ पर भी, and it is surrounded by the cold air. और यहाँ पर circulation हो रहा है. And such circulation is temperate cycle. Such circulation is temperate cycle. कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आया किसी को? Okay. है ना? So like we have two. थोड़ा आया था, तो थोड़ा आया तो that's good. तो देखो अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोसेस दोबारा से. इन सपोज दिस इज 60 डिग्री लैटिट्यूड, 60 और 70 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास वाला एरिया है. यहाँ से कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज आ रही हैं और यहाँ से वार्म ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज आ रही है ना. दीज आर द विंड्स. Slowly these winds will encroach in this territory and these winds will encroach this territory. तो जहां पर ये कोल्ड वाले को मिलेंगी वहां पर बनेगा वार्म फ्रंट और जहां पर कोल्ड वाले एनक्रोच करेंगे वहां बनेगा कोल्ड फ्रंट. Cold front. Getting my point? Polar winds would have high pressure or tropical westerlies would have high pressure. Yes. इसका प्रेशर ज्यादा होगा. Polar easterlies. I hope everyone is agreed on this. Everyone is agreed on this. क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत कम है तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होगा. वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो इनकी जो मूवमेंट वेलोसिटी है वो भी ज्यादा होगी. एंड दैट हाई मूवमेंट वेलोसिटी विल लेट देम एनक्रोच फास्टर इनटू द टेरिटरी ऑफ वार्म एयर और इन द वार्म सेक्टर. ये है वार्म सेक्टर, ये है वार्म सेक्टर. और यहाँ सिंस दे हैव लेसर प्रेशर तो दे विल एनक्रोच रीडली, मतलब सॉरी स्लोली, आई वुड से स्लोली. तो वार्म फ्रंट पर डेवलपमेंट होता है इस तरह के फ्रंट फॉर्मेशन का. यहाँ है कोल्ड एयर और यहाँ है वार्म एयर और वो इस जेंटल स्लोप पर जैसे ऐसे होता है. देखो मैं बताता हूँ कि ये था इनिशियली एरिया, ये है कोल्ड विंड का एरिया, ये है वार्म विंड का एरिया. ठीक है. यहाँ ये है बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री. यहाँ से वार्म एयर आई और यहाँ से कोल्ड एयर आई, ये दोनों टकराए. The warm air, as soon as it collides with the cold air, it will start rising over a gentle slope, and the cold air will soon turn like this to encroach into the lower part. Got my point? This is how vertical movement is done. और ये कहाँ है? Warm front पर, warm front पर, on the warm front. तो वार्म फ्रंट पर there will be a gentle slope and the wind will be rising over that gentle slope, warm wind. यानी ये बात हो रही है इस वाली कंडीशन. ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर कंडीशन थी हमारे पास. अब बात करते हैं इस वाली कंडीशन यहाँ पर जहां हमारा कोल्ड फ्रंट का डेवलपमेंट हुआ. बिकॉज हियर
the development of this front, ये जो यहाँ से cold wind आ रही है, they have high pressure, they will encroach faster. Faster encroachment would ultimately lead to development of very steep slope. यहाँ formation होता है बहुत steep slope का, और warm air rises over it very quickly. Warm air rises over it very quickly. और cold air भी यहाँ नीचे से काफी तेजी से penetrate करती है, काफी तेजी से penetrate करती है. So this is how a formation occurs, and this formation is like this. As you can see, यहाँ होता है development cold front का, यहाँ development होता है warm front का. And like they have pressure cells. ये जो lines हैं, they are isobars, indicating that in the center we have low pressure, and as we are moving further we have high pressure. तो ये जो low pressure center है, low pressure center, around this you can see that there's a development of warm air flowing like this, cold air flowing like this. So there is a development of wind circulating around a low pressure center in an anti-clockwise direction, and this is called as temperate cyclone. अब कहानी क्लियर है थोड़ी सी? Yes. वीडियो था मेरे पास. I wanted to show you. I'll show you, or I'll kind of send you the link of that video. है ना? I'll send you the link of that video. तो I think National Geography का ही है. अच्छा वीडियो है, in which you will realize that how the temperate cyclone formation is occurring. And in that they will show you a 3D image of this formation, right? तो write down. अब इसमें लिख लो, धीरे धीरे और समझ में आएगा. Warm air, weather related to warm air, weather related to warm front. तो slowly इसका डेवलपमेंट कुछ इस तरह का हो जाएगा. बिकॉज द वार्म एयर वुड राइज फर्दर, तो इसके सेक्टर का एरिया फर्दर कम हो गया. कोल्ड एयर ने और बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया. फर्दर राइजिंग और ज्यादा कैप्चर कर लिया. फर्दर वार्म एयर हैज नाउ ऑलमोस्ट moved up. The cold air has completely covered the area, and such front is called as occluded front. Occlusion का मतलब भी होता है elimination. इसको बोलते हैं occluded front, जब warm air को लगभग भगा दिया गया है, और has the warm air has almost risen up. Okay, ठीक है. And finally we have a condition. Where the warm air has been completely removed and now only cold air prevails, and this particular kind of condition is called as stationary condition or stationary front, where again the cold wind and the warm air becomes parallel. They become parallel and ultimately lead to calm condition. तो जब इस तरह का फ्रंट फॉर्मेशन पीक पर होता है, तो टेम्परेट साइक्लोन भी अपने पीक पर होता है. बिकॉज ऑफ दिस फ्रंट फॉर्मेशन विंड्स आर मूविंग, है ना. तो देन टेम्परेट साइक्लोन इज आल्सो एट इट्स पीक. और फिर बहुत ही सुंदर साइक्लोन्स आते हैं, लाइक कैटरीना. ओके. तो राइट डाउन. Warm air rises over the gentle slope. Warm air rises over the gentle slope of warm front. तो सारा प्रोसीजर ही वही है बिल्कुल. एक बार हवा ऊपर चली गई, है ना. Warm air rises over the gentle slope of warm front and cools adiabatically. अच्छा, we have written this ना. Cools adiabatically and finally causes moderate to gentle precipitation. For several hours. तो देखो वार्म एयर का क्या है, तो स्लोप इज जेंटल, तो काफी बड़े एरिया पर फैला होगा, तो इट विल राइज स्लोली, and there the cloud formation will also occur over an extended period.
causing a rainfall also over an extended time and space. Over extended time and space. Getting my point? So ultimately there would be a longer duration rainfall. Longer duration rainfall. Yes? But in the cold front, the idea is that the slope is so steep that the wind rises so quickly and almost all amount of moisture is being shedded in this zone only in a very short period of time. तो यहाँ क्या होगा? क्या बोलते हैं? Drizzle, moderate rainfall और drizzle for a longer period. यहाँ क्या होगा? Heavy rainfall for shorter. ये याद रखना. Warm front का करते हैं, ये cold front का करते हैं. ठीक है? Now write down about the cold front. Write down about the cold front. So the cold front is more aggressive. The cold front is more aggressive. Bracket में लो, where the cold polar winds tries to invade the warm sector. Bracket में लिख लो, where the cold polar winds tries to invade. Where the cold polar winds tries to invade the warm sector. वहीं पर तो कोल्ड फ्रंट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. The cold air is more aggressive. Bracket उसके बाद bracket close and penetrates the warm air territory towards subtropical region. Penetrates the warm air territory in subtropical region. It has a steeper slope. Penetrates the warm air territory in subtropical region and has a steeper slope. ठीक है. Got it or not? नहीं, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो. अब मुझे लगता है अब काफी क्लैरिटी आ चुकी है. इनिशियली वो थोड़ा टफ था. ओह माय गॉड. अच्छा, cold front has a steeper slope. Nikhil. How to explain it to Nikhil can be a tedious task. Nikhil. And how you would get it, Nikhil? You haven't taken any class of geography, and you have kind of क्या उसे बोलूँ मैं? Suddenly out of a blue moon. ऐसा कुछ. Okay. I feel कि आप कवर कर लो. निखिल का डिसेंसिटाइजेशन हुआ है मास्टर क्लास से हमारे साथ. ओके. आई डोंट नो, लेकिन जो गैप क्रिएट हुआ है बीच में उसे समझने में. ओके, लेट्स सी. He'll try to listen to it or be like, if you want any kind of help, so I'll be there. Yes. Yeah. We can discuss some topics if you want. But it would be quite difficult for me to explain geography without pictures. Vipul, control bhai. Vipul. जोश में होश नहीं खोने चाहिए. Mic is not working, otherwise I would have spoken. I like to talk. हाँ, we can talk over phone. You can call over Sarita ma'am's number and then we can kind of discuss. If you want to discuss some geography topics, then also we can discuss. Don't worry, right? Yes. You can call it any time, right? Okay. So, where we were? So we have now understood what the fronts are. Now moving ahead,
So write down the we have written weather associated with the cold front. Fan following बढ़ रही है. अरे नहीं, मेरी कोई fan following नहीं है शायद, और मुझे ऐसी कोई fan following नहीं चाहिए. I am happy to see Nikhil is back with us. Okay. Yeah, I am happy too, but he is back at such a stage कि यहाँ से कुछ भी explain करना काफी मुश्किल होगा मेरे लिए. कुछ कहना है परीक्षा? चलो, तो write down the weather associated with the cold front and write down they lead to formation of cumulonimbus clouds. क्योंकि देखो steep है, तो अगर steep slope होगा तो winds will rise at a faster rate and the DPT will come soon. And since the DPT will come soon, they will get enough time to form the cumulonimbus clouds. I'll repeat. So they lead to formation of cumulonimbus clouds. They lead to the the cold fronts lead to formation of cumulonimbus clouds, comma, which causes thunder, comma, lightning, and heavy rainfall for the heavy precipitation for shorter duration. Which causes thunder, comma, lightning, and heavy precipitation for shorter duration. Heavy precipitation for shorter duration. ठीक है? So I think I need not to explain this. This is very clear to you people. Please, Priya, Ruxana, Nupur, Preksha, Harini, Arinjay, Deepak. What about others? Shahid, Vipul. We have done the weather associated Vipul. So how it works कि जब भी साइक्लोन आएगा तो साइक्लोन एट इट्स पीक वुड बी लाइक दिस, इस तरह का फॉर्मेशन. यहाँ होगा लो प्रेशर सेंटर और आई, और ये चल रही होंगी विंड्स, हवाएं, इस तरह का विंड. तो ये होगा वार्म सेक्टर, इसमें होंगी वार्म विंड्स, और ये होगा कोल्ड सेक्टर जहाँ होंगी कोल्ड विंड्स, है ना, कोल्ड विंड्स. और ये है लाइंस आइसोबार्स. ठीक है? तो ये जो आइसोबार्स है दे काइंड ऑफ, यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर इंक्रीजिंग प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर. तो एंड दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट मूव्स एज अ सिंगल यूनिट डिपेंडिंग अपॉन किसके इन्फ्लुएंस में आया है. जनरली जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में आते हैं, जेट स्ट्रीम में लेकर जाते हैं क्योंकि इनका फॉर्मेशन ही ऐसी जगह पर हो रहा नहीं है ना. बट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर कंडीशंस, है ना. So, yes, Priya. So high pressure in case of warm front. Pressure मैंने क्या बताया? The pressure would increase from at the center. The pressure would be lowest, and the pressure would go on increasing to the outside. हाँ, high pressure की जो बात हो रही है, definitely what I am talking is कि यहाँ इस वाली wind का pressure ज़्यादा होगा इससे, और यहाँ जो मैं relation की बात कर रहा हूँ ये low pressure है और ये high pressure है. That is just high pressure with respect to this low pressure center और I. ठीक है? और वो लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विंड हैज बीन राइजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट. आइसोबार्स तो कांस्टेंट प्रेशर को शो करती है ना. ये जो लाइंस है ये कांस्टेंट प्रेशर को शो करती है. ये जो लाइंस है दिस इज ओनली टू शो कि यहाँ लो प्रेशर है, और ये जो लाइंस है ये शो कर रही है कि ये इसमें पूरे एरिया में प्रेशर सेम है, इसमें पूरे एरिया प्रेशर सेम है, बट ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं. इफ वी आर मूविंग आउटसाइड द लो प्रेशर सेंटर देन प्रेशर इज इंक्रीज. ठीक है? ओके, देन I think now warm front and cold front are completed.
एक डायग्राम बना लो। अच्छा पहले ऑक्लूडेड फ्रंट लिखते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट, और डायग्राम इसी में बनाएंगे, ठीक है। ऑक्लूडेड फ्रंट, देखो मेरा हाथ जो है आज मुझे लगता है कि मैं ऑर्थोगोनल काम नहीं करता हूँ। ऑर्थोगोनल समझते हो? आज मेरा हाथ जो है वो काफी 120 डिग्री पे चल रहा है। तो ये हो गया कोल्ड फ्रंट का डेवलपमेंट, और ये हो गया वार्म फ्रंट का डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये टेढ़ा नहीं बनाना, लाइक यू हैव टू ड्रॉ इट स्ट्रेट, है ना। और ये है वार्म फ्रंट का दैट जेंटल स्लोप, और ये है कोल्ड फ्रंट का स्टीपर स्लोप। और ये कंडीशन तब है, this condition is a condition when all the warm air from the lower atmosphere has been removed, and it is this condition, जब नीचे कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है, नीचे कुछ बचा नहीं, दिस इज वर्टिकल, ये है टॉप व्यू और ये है फ्रंट व्यू, ठीक है। So all of the air here has been, the warm air has been eliminated. The warm air has been eliminated. डायग्राम समझ नहीं आ रहा। देखो ये फॉर्मेशन होता है इनिशियली, तो ये वार्म एयर राइज कर रही है और ये कोल्ड एयर राइज पेनिट्रेट कर रही है। Slowly the cold air would penetrate and the warm air would rise completely, और cold air ये भी जगह घेर, ये भी जगह घेर। So now at base we have cold air only, and a bit of height in the air we have that front जहां पर cold air इधर जा रही है और warm air इधर जा रही है। Got my point? तो ये वो कंडीशन शो कर रहा था वार्म फ्रंट वाला, ये वो कंडीशन थी वार्म फ्रंट। जो कोल्ड फ्रंट पे हो रहा था वो मैंने ऐसे शो किया, और नीचे ये शो किया मैंने कि नीचे अब कोई वार्म एयर नहीं बची है, देयर इज कंप्लीट कोल्ड एयर डोमिनेंस, there is complete cold air dominance. Got it? बाकी हुआ क्या? What about others? So write down in this you need to write down that when the cold air completely displaces the warm air from the ground surface, when the cold air completely displaces the warm air from the ground surface, comma, such front is called occluded front, comma, such front is called as occluded front, such front is called occluded front, ठीक है। यानी वो कंडीशन है जहां पर टेम्परेट साइक्लोन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, एंड द ओनली थिंग व्हिच इज रिमेनिंग इज द मूवमेंट ऑफ एयर और विंड, आगे से, है ना। बस यहाँ पर विंड्स बची हैं कुछ जो मूव कर रही हैं, एंड द साइक्लोन हैज कंप्लीटली एंडेड। और लास्ट में स्टेशनरी फ्रंट, the fourth type of front is stationary front. The stationary front is either the condition which is before the occurrence of cyclone or at the end of the occurrence of cyclone. Yes, before or at the end, and in which the cold and warm air masses, they move parallel to each other without encroaching into each other's territory. Yes, देख सकते हो। The very first step in which they are moving parallel, and the last step in which they are moving parallel. ठीक है? So in this write down, the stationary front occurs when the contrasting air masses, the stationary front occurs when the contrasting air masses, instead of converging, comma, flows past each other. Yes, here the warm and cold air masses, they don't converge, rather they flow parallel to each other.
It is all because that they both don't have enough energy to encroach into each other's territory. Encroachment के लिए energy चाहिए, तो they don't have enough energy, है ना? तो ऐसा है, तो या तो फ्रंट बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है या फ्रंट बनकर खत्म हो चुका है, ठीक है? We have done the frontogenesis. Yes. अब हम लिखेंगे cyclones. We have done all these type of front, cold front, warm front. देखो ये है occluded front, देखो ये है occluded front. ग्राउंड से इस पार्ट तक सिर्फ कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर, और वार्म एयर यहाँ पर लाई कर रही है इन दिस फॉर्म. ये वार्म एयर सेक्टर, यस, ये है ऑक्लूडेड फ्रंट, ये है स्टेशनरी फ्रंट. अब वार्म एयर अपने रास्ते, कोल्ड एयर अपने रास्ते. ये है वार्म लाइक वार्म फ्रंट वेयर द स्लोप इज क्वाइट जेंटल. कोल्ड फ्रंट द स्लोप इज क्वाइट स्टीप. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू साइक्लोन. तो देखो साइक्लोन क्या है, इज नथिंग बट एक लो प्रेशर सेंटर होगा जिसके चारों तरफ we have movement of winds. Movement of winds in the northern hemisphere, this goes in the anti-clockwise direction, anti-clockwise, while in the southern hemisphere this goes in clockwise direction, clockwise. ठीक है. So write down now for the cyclones, write down the cyclones, write down the cyclones is the circulation of air. Cyclone is the circulation of air in closed isobars. Closed isobar का मतलब क्या है? The closed isobar means that the steep pressure gradient is occurring. There is steep pressure gradient. यहाँ से और यहाँ जाते में हम देखेंगे, if we are moving from the low pressure center to the outside, we will see that there is very fast increase of pressure, है ना, और vice versa. So there is very fast rate of change of pressure with the distance near the eye, and you can see as we move away from the eye, the isobar के बीच का जो distance है is getting increased. As we move away from the eye, the distance between the isobars is getting increased, which simply means कि pressure gradient is higher near the eye and the pressure gradient goes on decreasing as we move away from the eye. Pressure gradient decreases as we move away from the eye. ठीक है. तो PGF फोर्स कहाँ सबसे ज्यादा होगा? I only told this मैंने सिर्फ ये बताया that at the center we have low pressure and the isobars are quite close to each other near the eye. As we move away from the eye, the distance between these isobars goes on increasing, and the increasing isobar simply means that the rate of change of pressure is not as fast in the outer domain as it was near eye. यानी कि यहाँ पर प्रेशर चेंज बहुत तेजी से होगा और फिर then it will slow down. And this is the reason why we have gale force wind near the eye, not in the eye, near the eye. है ना? अगर temperate cyclones are coming, so initially there would be a warm front, then for occurrence of the calm region, है ना, or warm sector, and then there would be a cold sector, and then finally cold this cold front, then cold sector, and then finally the cyclone lapses. ऐसा वहां पर होता है. हमारे यहाँ कैसा होता है? Like in the tropical cyclones, initially a front of cyclone will come, then that eye would come, then back part would come. Our eyes, both the eyes are the areas of calmness. Eyes are the areas of calmness. They are low pressure centers. Okay. So we were writing
Write down. चलो ठीक है, last one. Cyclones are circulation of air in closed isobars, comma, around a low pressure center. Around a low pressure center. Around a low pressure center. Full stop. Continue, इसी के साथ. With increasing pressure outward. With increasing pressure outward. With increasing pressure outward, the rate of change of pressure decreases. The rate of change of pressure decreases. The rate of change of pressure decreases. Full stop. इसी में next point. Here the air blows. Here the air blows inward. भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो एयर कहाँ जाएगी? इनवर्ड. तो हेयर कॉमा द एयर ब्लोज इनवर्ड कॉमा in anti-clockwise direction in the northern hemisphere. Here the air blows inward. Here the air blows inward and develops anti-clockwise circulation in the northern hemisphere and clockwise circulation in the southern hemisphere. Here the air blows inward and develops an anticyclonic circulation in the northern hemisphere and clockwise circulation in the southern hemisphere. And clockwise circulation in the southern hemisphere. Next point. They are associated with atmospheric disturbances and instability. They are associated with atmospheric disturbances and instability. Clear? Anything like you want to ask? इसमें कुछ ऐसा ही समझ में नहीं आया? Atmospheric disturbances and instability. Atmospheric disturbances and instability. Right now I am feeling a bit of guilty, Nikhil. मैं बहुत ज़्यादा explain नहीं कर सकता. I may not be able to explain you in a kind of very explanatory manner. Sir, हाँ दीपक. Sir, the pressure gradient force जैसे जैसे बाहर जाते रहेंगे वैसे कम होता रहेगा ना? कम होता रहेगा, हाँ हाँ. लेकिन प्रेशर वो बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा ना, डेफिनेटली. हाई प्रेशर है ना बाहर, Okay, अंदर लो प्रेशर. The winds would try, यहाँ से देखो slow जाएंगी, and as soon as they will reach this close to center, they will rush. So temperate cyclones are that strong that even you can go along with them. Just like exams. Yes. वो आपको भी उठा के ले जा सकते हैं कि चलो आप घूम के आए, स्लो लिखेंगे और एंड में जल्दी से. Even in preparation it works, na Deepak? In the beginning we prepare very slowly, है ना? And as the exam approaches, our speed. एक किताब एक रात पे, हाँ मैं वैसे एक रात पहले भी बोलने वाला था, 2 घंटे बोलने वाला था. एक किताब 2 घंटे में खत्म होती है. Sir, Yes, please. so why the change of direction in case of southern and in case of northern, sir? It's all because of the Coriolis force. Yes, Okay, please. sir. Because of the Okay. Coriolis force. Price equal to, हाँ definitely Deepak, definitely. There was one semester, 7th semester था हमारा, and we were having topics like business marketing,
एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ाते हैं। और एक और लाइक कुछ MBA वाले टॉपिक्स के 2-3 सब्जेक्ट्स थे हमारे, तो दे वर माइनर सब्जेक्ट्स, है ना, मेजर और माइनर होते थे, दे वर माइनर। और टू मी इट वाज क्वाइट, ये कौन पढ़ता और क्यों पढ़ता है। मुझे शुरू से लाइक कोई भी आर्ट्स सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पसंद था। तो आई थॉट कि ये इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, और ये सोचते सोचते हमने पूरा सेमेस्टर निकाल लिया। तो इट वाज इन द मॉर्निंग, 7 बजे थे, एग्जाम 10 बजे था। आई वेंट टू माय फ्रेंड, उसने कहा बस यहाँ बैठ जा, एंड ही स्टार्टेड, और 2.5 घंटे में खत्म हो गई। और अंदर गए और सेम क्वेश्चन जो हम पढ़ कर आए थे, एंड यू नो बाद में क्या हुआ, फ्रेंड के तो आए 25 और मेरे आए 30। उसने अगली बार से नहीं पढ़ा। ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। ये 100 में से नहीं है ना, ठीक है, नहीं 100 में से नहीं है प्लीज, मैं वही सोच रहा था। These are out of 25। ठीक है, अभी रूल बुक्स पता नहीं है। कृतिका हाँ बोल रही है, ओह माय गॉड, कृतिका तुम तो मेरी पोल खोल दोगी। नहीं एक्चुअली ना हमारे यहाँ 35 मार्क्स की सीटीज होते थे। तो अच्छी बात ये थी कि हमारे यहाँ 3 सीटीज होते थे एंड 2 बेस्ट वर काउंटेड। तो हम जनरली थर्ड वाला देते ही नहीं। हमने सोचा क्या 2 नंबर बढ़ेंगे इसमें, तुम क्या खुश हो लोगे, हम थर्ड वाला ऑफन छोड़ देते। हम तभी देते थे जब हमने इन दोनों में से कोई छोड़ा हो, पहले दोनों वाले में से। दैट वाज आवर कंडीशन, तभी देंगे। एक बार मेरे टीचर ने मेरी कॉपी लॉस्ट कर दी, आई थिंक मैंने बताया शायद। तो ही रिक्वेस्टेड मी, हाँ कि भाई प्लीज लिख दे थर्ड वाला, प्लीज लिख दे। मैंने कहा सर देख लो, नंबर कम नहीं होने चाहिए, तो वो मैं देख लूंगा, तू बस प्लीज लिख दे, कॉपी हो गई है। चलो मैं लिख देता हूँ। इट वाज सो इंस्टेंट कि उन्होंने मुझे बुलाया और कॉपी दी कि चलो लिखना शुरू करो। मैंने कहा सर पढ़ा तो कुछ नहीं, बोलते नंबर में देख लूंगा, तुम लिखना शुरू करो। वी वर राइटिंग साइक्लोन्स। समझ में आया साइक्लोन्स का काम? Yes, till now things are clear. Okay, cyclone is a circulation of air, as we have seen in the close isobars. There is a center called I, and as we move out, the pressure increases. They are associated with atmospheric disturbances and instability, and these are the ones that causing the rainfall. And they bring changes to the weather conditions of that place where they occur, and often contribute to the climate. Okay. Now we are going to begin with ये कुछ conditions हैं। You might know कि कुछ कैटरीना वगैरह करके साइक्लोन्स आते हैं, hurricanes they are called in US, है ना, tornadoes as they are called. Yes, although the one I am talking about, the names are for tropical cyclones, है ना. The cyclone, these temperate cyclones are often called as temperate cyclones only. Okay. So we'll be beginning with temperate cyclones, and you can see how they occur. This map I feel is very much clear to you people, how the cold wind kind of encroaches in this zone and how the warm air coming from the marine tropical air mass, and here we have cold polar continental polar air mass, and they both strike and then lead to formation of cyclones, which often occur on the southeast side of US, often causing huge devastation. These are some of the regions across the world where we witness such formations, like temperate cyclones occur. You can see these all low pressure centers are the regions where the this temperate cyclones occur. This H means for high pressure, which is generated
indicating the phenomena of anticyclones. You can see they are largely in the belt, the 60 to 70 degree belt in both the hemisphere. They are called as Willy Willies in this Australia. Hurricanes here, typhoons here. Okay. First, we'll be doing the temperate cyclone. Then we'll be doing this tropical cyclone. Okay. We have to discuss temperate cyclone like this only. So write down in the temperate cyclone the very first line that like ये जो data होगा, this is very important because often the question अब तो नहीं लेकिन for last few years the question has not been there, but उससे पहले UPSC हर 1-2 साल पे पूछ लेता था कि differentiate between the temperate and tropical cyclones, either this way or that way, in prelims or mains. तो इसलिए ये important topic है. तो यहाँ से जो भी लिखवा रहा हूँ मैं is very important. Write down in the temperate cyclone first point that these systems develop in the middle or higher latitudes, comma, extending from 35 to 65 degree. Extending from 35 to 65 degree. है ना? Although यहाँ पर भी 35 डिग्री क्या है, मिडिल लैटिट्यूड, तो यहाँ पर भी साइक्लोन्स होते हैं जिनको बोलते हैं मिडिल लैटिट्यूड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. मिडिल लैटिट्यूडनल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन इंडिया. ठीक है, जो विंटर्स में आते हैं, बट दैट इज काइंड ऑफ वन स्पेशल कैटेगरी जो हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि ये थोड़ा अलग ही है, not part of syllabus till now. So next point इसमें they are also called as extra tropical or wave cyclones. देखो जनरली यहाँ जो फॉर्मेशन है वो एक V शेप का है, तो इनको V साइक्लोन्स भी कहते हैं, इनको वेव साइक्लोन्स भी कहते हैं, इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं, because they are occurring outside the tropics, so they are also called as wave cyclone, extra tropical cyclones or V-shaped cyclones. Yes, V-shaped cyclones. Next point. Because of their low pressure centers, they are also called as depressions. Not mental depression, which we people suffer from. They are climatic depressions. They are also called as depressions. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. कुछ लोग डिप्रेशन से उबर कर वापस आए हैं और मैं भी शाहिद इज वन. नेक्स्ट पॉइंट, देयर अकरेंस. शायद मुझे उम्मीद थी कि क्लास वहां पर भी ली जा सकती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि was medical condition, तो फिर मैंने I thought कि चलो ठीक सब ले तो सकता था सब, बट वहाँ नहीं ले पाता था सब, नहीं ले पाता सर. रिकॉर्डेड देख लिया मैंने, काफी देख लिया, अभी देख ही रहा हूँ. और भी लोग हैं यहाँ पर जो गायब है. And what Nikhil was doing for these days, Nikhil, ये इतने सालों से what you were doing for these years? He was searching for a new laptop. अच्छा, MA कर रहा था. Oh my God, कृतिका knows everything.
सर अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी उससे मेरी। अच्छा, अच्छा। वो बोल रहा था एमए की क्लासेस में बिजी था और दूसरे बैच में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन मुझे फिर से इसी में आना था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ओके, दैट इज द होल थिंग। कृतिका इज जीनियस, सब पता है। अंतर्यामी, अंतर्यामी। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। देयर अकरेंस इज बिकॉज ऑफ मीटिंग ऑफ कंट्रास्टिंग एयर मासेस एंड आल्सो आई हैव चेंज्ड द बैच बट आई डिडंट लाइक दैट बैच। लाइक ही शुड हैव बीन हियर ओनली, है ना? वो अगर शुरू से इसी बैच में रहता ज्यादा अच्छा होता। Whatsoever. So their occurrence is because of meeting of contrasting air masses. Their occurrence is because of meeting of contrasting air masses. Example, the warm tropical air mass colliding with the dense cold polar air mass. Colliding with the dense cold polar air mass. Warm tropical air mass colliding with the dense cold polar air mass. ठीक है? You can kind of draw this figure if you want. ऐसा एक फिगर बना लो. This would be helpful. लिख सकते हो. Cold polar air mass, warm tropical air mass. ठीक. Next point. The front so created due to convergence of these contrasting air masses. The front so created due to convergence of contrasting air masses, leads to development of temperate cyclones. Leads to development of temperate cyclones, which can occur over both land and sea. The front so created due to convergence of contrasting air masses leads to development of temperate cyclones. Leads to development of temperate cyclones, which can occur over both land and sea. ये जो formation है temperate cyclones का can occur at any place, either on land or on sea. The tropical cyclones can they be generated on land? Can the tropical cyclones be generated on land? Yes. Okay, Nikhil, I can agree with you, but ऐसा नहीं होता. The tropical cyclones cannot be generated over land. They can only generate over water. They can only, that is a different thing that they have generated over a water body which is on land. Which is on land. That can be a different thing. Why? किसी को पता है why? Nikhil, you need not to rush. धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. Don't worry. Slowly you will get everything. Yeah? ITCZ shift K is important. No, Deepak, not ITCZ. The reason is water supply. Water supply. Because the energy for the tropical cyclone comes from the latent heat of condensation. जिसकी हमने पहले बात की थी. That energy is actually the driver of tropical cyclone. और वो कहाँ मिलेगी? That will be present only when the water surface is available. आएगा समझ में? When we'll come to it. है ना? अभी तो ठीक है. I don't expect it. Next point.
These developments comes under the influence of westerlies. These developments comes under the influence of westerlies and thus moves from west to east. तो यहाँ पर बेसिकली इस तरह का फॉर्मेशन, the jet stream flows like this. So they take away these temperate cyclones to far off regions. These development comes under the influence of westerlies and moves from west to east. Next point. Initially, अब यहाँ पर प्रोसेस, ये है बेसिकली प्रोसेस कि फ्रंट फॉर्मेशन या साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है. This I will be telling you in very minimum words. So initially the front is stationary. After some time, the warm and cold air start encroaching into each other's territory. After some time, the warm and cold air starts encroaching into each other's territory. Full stop. The warm air rushes over south, while the cold air rushes towards north. The warm air rushes from south, not over. The warm air rushes from south, while the cold air from north. And after some time, they develop an anticyclonic circulation. After some time, they develop an anticlockwise cyclonic circulation. Anti-clockwise cyclonic circulation. Anti-clockwise cyclonic circulation. After some time, they develop an anti-clockwise cyclonic circulation. अब यहाँ पे लिखना ब्रैकेट में in northern hemisphere. Full stop. At this stage, the temperate cyclone is at its peak. At this stage, the temperate cyclone is at its peak. At this stage, the temperate cyclone is at its peak, and winds move or rush, and winds move or rush towards the low pressure center. Winds move or rush towards the low pressure center. तो ये जो स्टेज है ये काफी like this is the developed stage of temperate cyclone at which the cyclone is moving with its peak velocity. Yes, and this can be a disaster, can be a very great disaster. But tropical cyclones are more harmful than the temperate ones. Although both can be very harmful. So ये last line क्या लिखी हमने? Yes, at this stage the temperate cyclone is completely developed and the wind rushes towards the low pressure center, है ना? अरे कोई लिखा है? नहीं. And the wind rushes towards the low pressure center. Also
there are well developed components. Also there are well developed components like warm front, cold front, warm sector and cold sector. Also there are well developed components like warm front, cold front, warm sector and cold sector. और वो वाला डायग्राम, अच्छा यू दिस डायग्राम यू पीपल हैव ड्रॉन ना, ये डायग्राम तो बना लिया. You can draw it in this manner if you want, like this. Cold layer, warm layer. ये डायग्राम एसओपी है, समझो, ये कह सकते हो यूएसपी है फॉर द साइक्लोन्स. तो अगर साइक्लोन का क्वेश्चन आता है विच एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन, तो ये डायग्राम मस्ट है. वहाँ पूछा है, नहीं पूछा, बना दो. ठीक है. और इस डायग्राम के नीचे या पास में कहीं लिख लेना एक पॉइंट. The warm air sector or the warm sector or the warm air sector is wedged, W-E-D-D-E-D. Warm air sector is wedged between the cold air sector, between the cold air sectors, or between the cold air sector. So that wedge is basically the formation of this kind of arrangement. ये और यहाँ पर हमारा warm front. Now how it proceeds further. So with time, next point, with time the warm air glides over or rises over the cold air sector. With time the warm air glides or rises over the cold air sector. Warm air glides or rises over the cold air sector, bracket में across the cold front, and bracket close, and leads to formation of clouds and cause precipitation. Leads to formation of clouds and cause precipitation. नेक्स्ट पॉइंट समझाना है इसमें कुछ? हाँ, अब मुझे लग रहा है कोई लिख रहा है across the cold front. Cold front and leads to formation of clouds and cause precipitation. Oh my god. Next point. After this the cold air further pushes the warm air. The cold air further pushes up the warm air and completely displaces it from the ground. After this, the cold air further pushes up the warm air and completely displaces it from the ground to form an occluded front. Full stop. At this stage, the cyclone dissipates. थोड़ा बोरिंग हो गया ना? At this stage, the cyclone dissipates. Theory is boring. अब तो टॉपिक तो समझ में आ ही है. अब all you have to do is write this theory. क्योंकि साइक्लोन वही है, बस उसमें क्या फिलिंग मटेरियल क्या चाहिए वो बना रहे हो आप इस वक्त. Yes.
The last point, they can occur during any season. Actually, the temperate cyclone, they can occur during any season, right? It is not they will be during a particular month only, like in the tropical cyclones. They can occur during any season, but become strong during the winter. Why? Because the contrasting temperature difference is larger. है ना? यहाँ पर जो cold polar winds होंगी, उनका temperature ज़्यादा होगा. बहुत like it would be much lower than the tropical air mass. So the contrast would be more during the winters. That gives more energy to the temperate cyclones. यही contrast से ही उन्हें energy मिलती है. Sir? Yes. So then, is it also possible that during winters, when it becomes more stronger, it mostly occurs at sea than on land? Because No, it is not the case. सर वो heating की वजह से, क्योंकि उस वक्त sea, the breeze In that case, don't you think it should be on land rather than sea? Land would be much colder than the sea in the winters. Yeah, but sir, that would replace the cold air coming from the polar regions that would come near where the low pressure is created, right? Or उसको sea is much more. Yeah, sea will be much more have much more temperature than land. So ऊपर में low pressure area तो वहाँ पे create होगा ना sir? No, it is not that case कि ऊपर में low pressure area कहाँ create होगा. It is all because के where the more contrasting air masses are meeting. Okay, sir. So it is actually over land. Okay. Rather than on sea. The contrast or the temperature difference between the two air masses would be more on land rather than on sea. क्योंकि सोचो यहाँ पर भी marine moderating effect आ जाएगा, यहाँ पर भी marine moderating effect आ जाएगा. That moderation would ultimately reduce the difference of temperature between these two air masses. But here, suppose this marine tropical is meeting the continental polar here at this junction, so यहाँ पर there would be severe tropical temperate cyclone. They would be more severe. Yes? Okay. Or koi? Any other question that you people have got? You can think like the temperate cyclones are like the fights the couples have. So when they have more contrasting features, the fights will be more. And when they have a bit of similar feature, तो फिर लड़की पे डिपेंड है ना. ये शायद ड्राइनेस. ये किस तरह की ड्राइनेस की बात हो रही है? The stability. Okay, that will come with anti-cyclone, और वो इंसानी जीवन में नहीं आती. That is not the case with human life. Contrasting factors नहीं होंगे तो फिर stability ही reserve करेगी ना at the center of it. नहीं, a small amount of stability if you are talking about कि जो calmness है I की, तो वहाँ पर थोड़ी सी stability होती है ना. But stability, और ये stability नहीं, rather ये instability create करता है. अरिंजय, contrasting feature they lead to instability. The stability. I'm talking about if the features, if मतलब in the example you cited, if they had you can use it. Go on. In this case तो precipitation होगा, मतलब instability. Okay. In that case अगर उनके features एकदम अलग होगा, opposite हो गए, हाँ, तो couples के साथ stability आएगी. आपकी वही analogy use करके, मतलब I'm just supposing कि cyclones में अगर ऐसा होता तो anti cyclones में कैसा होगा at the center of it. Okay. Anti cyclone कैसा होगा? The only thing I can say, anti cyclone is cyclone के behavior is quite opposite of that of cyclones. ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Anti-cyclone is just opposite of a cyclone. Anti-cyclone is just opposite of cyclone.
अभी तो मैंने बोला वो एक काइंड ऑफ क्या इमेजिनरी कंडीशन है ह्यूमन लाइफ में, वो नहीं आता. You could have fights, you could have those all unstable moments in your life, but stability वाली कहानी दो तीन केस में आ सकती है बस. Like either if you are Mr. Modi, है ना, एग्जाम्पल्स आ there, बट वो बहुत रेयर है. जैसे कि एंटी साइक्लोन भी कमी आते हैं, स्टेबिलिटी भी कमी आती है. चलो, so now we are going to write down the few characteristics of the temperate cyclone. Few characteristics of the temperate cyclone. Although what we have written is actually the characteristics only, but ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेसिफिक रखेंगे कि वेलोसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, मूवमेंट किस तरह का है. ठीक है. So now we are going to pinpoint the characteristics of the temperate cyclone. Write down the first one, that they can be elongated, circular or V-shaped. This is about the shape they are having. They can be elongated, circular or V-shaped. You know, generally V-shape का formation होता है, but they can be this elongated shape or this circular shape. Such shapes can also be there. Yes, they can be elongated, circular or V-shape. Generally elliptical form में exist करते हैं, है ना. They have a low pressure center. They have a low pressure center with closed isobars. With closed isobars. है ना? तो जो लो प्रेशर सेंटर है वहां पर the isobars are quite close to each other. As we move away, they move apart. As we move away, they move apart. Nikhil, but you can ask few questions if you want at any point, right? I'll repeat the second point. They have low pressure in the center. They have low pressure in the center and with closed isobars. With closed isobars. With closed isobars. Hardly 2 or 3 classes are left, Nikhil, for geography, or maybe you can say 4 or 5. Although you can remain with these friends of yours in other subjects, शायद दूसरों का भी थोड़ा बहुत बाकी होगा, है ना. Nikhil, I think you have completed the environment, Nikhil. Okay. Now, write down the next point. The precipitation along the cold front is the precipitation. Okay, last chapter. Don't worry. The precipitation along the cold front is heavy and for shorter duration. Is heavy and for shorter duration. इस टॉपिक से पहले लिख सकते हो वेदर, सॉरी मैं भूल गया. For shorter duration, while along the warm front it is mild and longer. Along the warm front it is mild and longer. That is for longer duration. While along the warm front it is mild and longer. इसी में in the same weather point, the cold sector सब point बना के लिख लेना. The cold sector has clear sky and stability. The cold sector has clear sky and stability, while the warm sector has got low pressure
and unstable conditions. Low pressure and unstable conditions. Because cold sector has got cold wind, which is moving downward, settling down to encroach into the warm air territory. And that settling down will not cause any rainfall. So जो भी बारिश वगैरह, like all that instability would occur, तो वो only in this warm sector and in this front, इस region में होगी. Only in this region. In this entire cold sector, we won't have much of the climatic condition. Largely, it would be stable. But this region from here to here, this entire region would witness the instability, the climatic instability. The climatic instability. Done? So, Yes, please. so ये जो आप थर्ड पॉइंट जो आप डिक्टेट कर रहे थे वहाँ से एक बार रिपीट कर दीजिए. I lost my connection. Okay, which was the third point? The precipitation along the cold front. यही वाला? The precipitation Yes, along sir. the cold front is heavy. The precipitation along the cold front is heavy and for shorter duration, while along the warm front it is mild and longer. While along the warm front it is mild and longer in duration. Longer in duration. Then I talked about one more sub point in it, that the cold sector is associated with dry, with clear sky and stability. The cold sector is associated with clear sky and stability, while the warm sector is associated with low pressure and unstable conditions. Warm sector is associated with low pressure and unstable conditions. Okay? So clear sky and what? Warm Clear sector is sky associated. and associated with low pressure and unstable conditions. प्रेक्षा बाकी लोग थैंक यू बोल रहे हैं इस वक्त. So नहीं समझ आया, रिपीट कर दीजिए. बाकी लोग थैंक यू बोल रहे हैं ना. पहले ये बताओ, बाकी लोग थैंक यू बोल रहे हैं एक और बार. तो द कोल्ड सेक्टर, मैं तो चाहता हूँ जितना जल्दी खत्म हो जाए, बहुत ज्यादा बोरिंग टॉपिक है. देखो, the cold sector is associated with clear sky and stability. The cold sector, ये जो cold sector था, is associated with clear sky and stability. ये जो है प्रेक्षा, actually this particular sector has got cold air, and that cold air is trying to settle down, and that settling down is always associated with stability and dryness. Stability and dryness. And this ultimately causes what? No climate at all. While in this warm sector, we have hot air which is rising up, and this rising up is actually bringing the instability to this region, whether on the cold front, warm front, or in the warm sector. So here region है dry, clear sky and stability. Warm sector is associated with low pressure and instability or instability. Sorry, unstable conditions or instability. Instability शायद कोई word ही नहीं. Yes, Deepak, you wanted to say anything? अच्छा, थैंक यू. अभी है कुछ समय. यहाँ किसी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है परीक्षा. वो लोग भी लिखना नहीं चाहते थे. देखा कितने लोग थैंक यू बोल रहे हैं इनडायरेक्टली थैंक यू बोल रहे हैं. चलो, तो वी हैव टू डू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेट साइक्लोन्स एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. उससे पहले मुझे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कराने पड़ेंगे. Then we will write the difference between the two, or if you want you can write down the difference first, है ना. So it's your wish. लिखें differences, फिर कल tropical cyclones पढ़ लेंगे. तो कल करते हैं. मतलब
Like you people are always ready, है ना, गाड़ी में चाबी लगी हुई है, बस सर एक बार बोलो और स्टार्ट कर कर भागे. Oh my God. हाँ. So from my side to all of you here, I wish you kind of happy holiday, happy festivals. एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं आज, और हॉलीडे तो आपका है नहीं, तो हॉलीडे भी नहीं. So then happy festivals, happy new year also, because in large part of India this season is being celebrated as the beginning of new year, है ना? Like I don't know whether Ramzan is being celebrated as new year or not. रमजान पे भी होता है क्या? Like I don't know about this. मुहर्रम पे होता है. Yes, Usama, बता सकते हो आप? I would like to know on this. क्योंकि like I know about many, that Ugadi, Bihu, and that the first day of Navratra, the Vikram Samvat is started on that. Okay, Muharram is the new year. And I think Parsis, they celebrate on Diwali, है ना, Navroz. Jainas and Parsis, they celebrate. Navroz is for Parsis, and for Jainas it's Diwali. Jains have their new year on Diwali, if I'm correct. Yes? कोई है? नहीं, ये नहीं पूछा जैन है, जिस किसी को पता है. ठीक है का क्या मतलब है? ऐसा दिवाली का सही है. ओके. ओके देन, तो एंजॉय ऑल दीज फेस्टिवल्स. आपको पूरे कितने 4-5 घंटे तो दिए ही जाएंगे एंजॉय करने के लिए, 7 से 12, तो आप एंजॉय कर सकते हैं. कुछ लोगों को तो 7 से भी आगे जाता है ना शायद. गॉड ब्लेस देम. आपको होमवर्क करना है सर मैप पर. अच्छा. आई थिंक ज्योग्राफी क्लासेस आर एट इवनिंग, तो उनका तो न्यू ईयर ऐसे ही चला गया. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड माय सेशन हियर. थैंक यू एंड जय हिंद.